Hello, good evening everyone. So today we are here for the second lecture of the unit third, that is magnetic effect of electric current. So in the previous class what we studied about the force acting on a charged particle which is moving. That is, when the charged particle starts moving, then a force starts acting on it, and that force is called the magnetic force. And we have found a formula for finding the magnetic force, and that was Fm equal to Q into V cross B. That was the force acting on a charged particle which is moving in a magnetic field. Okay, so we know the magnetic force acting on a charged particle which is moving in a magnetic field is given as Fm equal to Q into B cross B. Fine. Now ये मेरे को तो पता चल गया. अब हम लोग को क्या करने का है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स निकल गया. अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली फाइंड करने जा रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वाज आल्सो फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल का यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पे हम लोग निकाल रहे थे. B cross B. Okay, so that we know. We also used the Fleming's left hand rule. To find the force acting on the charged particle. So Fleming's left hand rule भी हमको पता है. So these topics now we know. Now our aim is to find the force acting on a charged particle when the charged particle is moving perpendicular to the direction of magnetic field. So today we are going to discuss about the force acting on a charged particle which is moving perpendicular to the direction of magnetic field. So let's start today's topic. तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सो फोर्स एक्टिंग सॉरी इसके पे जाने के पहले हम एक और टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. सो दैट टॉपिक इज लॉरेंज फोर्स. सॉरी ये टॉपिक मैं भूल गया था थोड़ा सा. ये पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे के टॉपिक पे चलेंगे. तो हमारा टॉपिक है आज का लॉरेंज फोर्स. सो व्हाट इज बेसिकली द लॉरेंज फोर्स? सो बेसिकली वी कैन से दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल where both electric and magnetic field exist. It's called Lorentz force. So what is basically the Lorentz force? The Lorentz force is the force which exists or which starts to act when there is a both electric as well as magnetic field. So the Lorentz force Fl can be given as it is equal to the force due to the electric field plus force due to the magnetic field. तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया और मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, दोनों आ गया साथ में, और वहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस केस में जो फोर्स एक्ट करता है उस चार्ज पार्टिकल पे, उस फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स. नाउ व्हाट वी नो, इफ देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ चार्ज पार्टिकल इज देयर, अ फोर्स इज गोइंग टू एक्ट ऑन इट एंड दैट फोर्स विल बी Q into E. ये तो सबको पता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स हो जाएगा Q into E. और जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तब फोर्स हो जाता है Q into B cross B.
Okay, so there are two types of force. One force is called Q into E, that acts when there is an electric field, and another force is Q into V cross V, that acts when there is a magnetic field. Now the combination of these two forces are commonly known as the Lorentz force. So that is the expression for the Lorentz force. Now here I can take Q, it should be common, so that should be equal to E plus V cross B. So we can say that the direction of Lorentz force can be given as the cross product of this and this. तो ये जो हमको होगा that will give the direction of Lorentz force acting on the charged particle. Lorentz force का कई तरीके से यूज है, we will see in next classes, coming classes. But basically this is the Lorentz force when there is a both electric as well as magnetic field. Okay, so now let's go for the next topic. The next topic is, today's next topic is, that was previously discussed. And the topic is force acting on a charged particle. Moving perpendicular to magnetic field. So what is the force acting on a charged particle when the charged particle is moving? We are here for the finding the force acting on a charged particle which is moving perpendicular to the direction of magnetic field. So let us take a magnetic field. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, और पहले तो इसके बेस पे एक टॉपिक भी था हमारा जो पढ़ना था, लेकिन इस साल से उसको हटा दिया गया है, साइक्लोट्रॉन. तो साइक्लोट्रॉन वी हैव टू स्टडी, बट इन दिस ईयर द टॉपिक हैज बीन रिमूव्ड. So I think I am also going to skip that topic. So let's go for the topic that is the magnetic field. Oh, sorry. Assume it to be cross. ये क्रॉस था, मैंने प्लस कर दिया. Okay, that is assumed to be crossed. So थोड़ा सा बोर्ड के अगर मैं कुछ एंगल पे मूव कर देता हूँ तो ये क्रॉस ही दिखेगा, तो आप लोग मान लें कि ये क्रॉस है. Let us assume that plus is equal to cross. Okay, so if this is to be cross, what cross represents? So cross represents a magnetic field which is inward. अंदर की तरफ जो magnetic field होता है उसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. So this is a magnetic field which is inward, अंदर की तरफ, बोर्ड की तरफ है. Okay, now at any instant let a charged particle was moving and that was produced here. एक चार्ज पार्टिकल हमको मिला जो इस डायरेक्शन में जा रहा था. इसी टाइम पे जब ये था तभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऑन कर दिया. ओके, सो चार्ज पार्टिकल वाज मूविंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन. व्हाट इज गोइंग टू हैपन if the charge particle is moving in rightward direction? What is going to happen? So we can say that a force is going to act on it. We know that whenever there is a charged particle which is moving perpendicular to the direction of magnetic field, a force starts to act on it. So a force is going to act on the charged particle. And what should be the direction of force acting on the charged particle? What should be the direction of force acting on the charged particle? So the force acting on the charged particle can be found by using either the Fleming's left hand rule or the right hand rule. So let's use both the rules. Let's first use the Fleming's left hand rule. So the Fleming's left hand rule says that if I can stretch first three fingers of our left hand perpendicular to each other, in that case the first finger, the fingers, the thumb, middle, first finger and the middle finger, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? FBI. That shows that
F is the force acting on the charge particle, B is the magnetic field, I is the current. करंट का डायरेक्शन क्या होता था? पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट। तो ये हो गया हमारा B जो अंदर की तरफ है, I जो करंट का डायरेक्शन को मूव कर रहा है, वेलोसिटी को डायरेक्शन को मूव शो कर रहा है, तो ये हो गया फोर्स। तो इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, फोर्स किधर लगेगा? तो ऊपर की तरफ। और अगर मैं राइट हैंड रूल भी यूज करता हूँ तो ये हो गया ये हो गया B, ये हो गया B, तो B क्रॉस B अगर मैं यूज करता हूँ तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगना शुरू होगा किधर की तरफ? तो ऊपर की तरफ फोर्स लगना शुरू होगा। और क्योंकि इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन घूम के ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाएगा। So the charge particle will start moving like that. ये मूव कर गया क्योंकि इस पे जो फोर्स लगा, फोर्स तो ऊपर की तरफ लगा। So because of this force, the charge particles moved in a circular path. Now what it is going to do now? तो और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए भाई मेरे को, मैग्नेटिक फील्ड और ले रहा हूँ। Now what it is going to do now? Let's see, here the velocity becomes upward direction. What should be the force? So let's go for the right hand rule. This is the velocity, this is the magnetic field. The force is going to act in this direction. So a force will start acting on it. The direction of force will be inward. So what it will do? It will move the direction of the charge particle like this. फिर से इसको गोल घुमा देगा भाई। अब इस टाइम पे यहाँ पे आ गया, अब इसका वेलोसिटी हो गया इस डायरेक्शन में। अब इस पॉइंट पे क्या देख रहे हैं भाई? अगेन लेट्स फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। दिस इज B, this is B, the B cross B, force will start acting downward direction. So a force will act on the charge particle which will be in downward direction. So now it will what again do? It will again change the direction of the charge particle, and again that will be like this. तो ये हो गया B and that will move downward. Now जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये हो गया B, ये हो गया B, okay. So at that point again of the velocity is going downward. Now let's find the direction of force acting on the charge particle. So the charge particle is going downward, the velocity is downward and magnetic field is inward. So the force is going to act towards left, so towards right. So a force will start acting on it and that will be the direction of force. So it will what do? It will again move the charge particle in a circular path. So what we can see here, the charge particle which is moving in the magnetic field, it will going to have a circular path. How? So we can see how, because at every instant of the motion of the charge particle there was a force acting on it, and the force acting on it was inward. The force acting on it was inward, अंदर की तरफ से force था. So a force starts acting on it and that force acts towards inward. ठीक, तो ये लगातार अंदर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। ठीक है, so we can see that whenever charge particle moves in a magnetic field and the motion of the charge particle is perpendicular to the direction of magnetic field, a force will act towards the center and the path of the charge particle will become circular. So we can say that a force will act on it and the force of the charge particle is towards the center, so it will start moving on a circular path. Now since it is moving on a circular path,
there is a force required for the moving onto the circular path. That force is called the centripetal force. मीन्स एक चार्ज पार्टिकल तभी सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकता है जब उस पर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगे, और इस सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. सो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. नाउ इफ आई हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वी कैन फाइंड इट. नाउ वी कैन राइट इट. नाउ द सेंट्रीपिटल फोर्स, the centripetal force required for the circular motion, is given by magnetic force. Okay, so that is, we can say it Fc equal to Fm, the centripetal force. What is the centripetal force? The centripetal force is equal to mv square by r, and magnetic force is equal to q into b into b. Q into b, b into sin theta, because it is a cross product. But since it is perpendicular, sin theta will be equal to sin 90 equal to 1. So b equal to cancel. So from there, what we have found, the radius of the circular path r is equal to mv by qb. So a charged particle which is moving on the circular path due to the magnetic force will have a radius which is equal to mb by qb. So that is the radius of the circular path which is moving in the magnetic field. Okay. Now what we can further study about that, इसके आगे हम लोग और क्या देख सकते हैं. So we can see that is the radius of circular path which is equal to mb by qb. Also if I have to find radius, हो गया मेरा, वेलोसिटी से जो भी होगा ही होगा. Now the radius simply depends on what factors? The radius depends on the mass, directly proportional. Greater the mass, greater will be the radius of the circular path. It depends on the velocity. Greater the velocity, greater the radius of circular path. It depends on the charge. Greater the charge, smaller will be the radius of the circular path, and depends on the magnetic field. Greater the magnetic field, smaller will be the radius of the circular path. So on these factors, the radius of the circular path is going to depend. Okay. Now that is the radius. Now let's go for the finding the frequency of the circular path. Let's first time period. So the time period of the circular path can be found by, now time period. तो अगर ये मेरा सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, ठीक है, ये मेरा सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, तो हम लोग टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं? तो टाइम पीरियड हमें फाइंड करने का था t इक्वल टू, और बेसिकली वी कैन से दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. Okay. Now if the charged particle is moving with a velocity v, and what distance it is going to cover? So it is going to cover a distance of 2 pi r in one time interval of t. So I can write v should be equal to 2 pi r by t. Okay, fine. So from that I can write the time equal to distance by speed. Okay. So from that logic I can write time period equal to distance by speed. Now how much distance it is going to cover? It is going to cover a distance of 2 pi r, and what is the speed? Speed is equal to v. What is the speed? Speed is equal to v. So time period is equal to 2 pi r by v. That can be written as 2 pi. r की वैल्यू क्या था? तो r का वैल्यू था mb by qb into b get cancelled out. So time period equal to 2 pi m by qb. That is the time period of rotation of the circular of the charged particle in the circular path.
A equal to 2 pi r by qb. On this charged particle is going to rotate in the magnetic field. Now, what a very significant thing we can notice in this formula, that is T is proportional to m, very good. T is proportional to 1 by q, very good. T is proportional to 1 by b, very good. But the T is not proportional to b. That is not there. टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. मतलब तुम कितना भी तेज क्यों ना घूम लो, अगर तुम चार्ज पार्टिकल हो, तुम कितना भी तेज क्यों ना घूम लो, तुम्हारा टाइम पीरियड फिक्स ही रहेगा. टाइम पीरियड तुम्हारा मास पे डिपेंड कर सकता है, चार्ज पे डिपेंड कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन टाइम पीरियड जो तुम्हारा है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा. वॉट एवर मे बी द वेलोसिटी, the time period is going to remain fixed, because the time period does not depend on the mass. Time period does not depend on the time period does not depend on the velocity. It depends on the mass, charge and the magnetic field. Okay? क्यों ऐसा हो रहा है भाई? तो ये हो रहा है हमारे इस रिलेशन की वजह से, because r was equal to mb by qb. Now what I can see, greater the velocity, greater will be the radius. Greater the velocity, greater will be the radius, and since the greater will be the radius, what is going to happen? What is going to happen? Since the radius is very very greater compared to the charge, radius is getting greater with the velocity, the time it requires to revolve around that greater radius will be greater. So with increase in velocity, the radius also increases. That is why the time period remains constant. Okay? So that what we can relate over here. तो इस तरीके से टाइम पीरियड हमारा डिपेंड करता है किन किन फैक्टर्स पे हम देख पा रहे हैं. नाउ लेट्स गो फॉर सम नेक्स्ट. लेट्स फाइंड द फ्रीक्वेंसी. सो द फ्रीक्वेंसी, इसमें तो कुछ करना नहीं है. वी नो द फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, सो दैट शुड बी इक्वल टू qb बाई 2 पाई m. सो द फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू qb बाई 2 पाई m. ओके, सो दैट इज व्हाट वी गेट हियर. ये मेरा फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हो गया. नाउ व्हाट इफ वी हैव टू फाइंड an expression, what if we have to find the expression for the kinetic energy? Now what we know, the kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square. Kinetic energy equal to 1 by 2 mv square. Now here I have 1 by 2, mass is as mass. Velocity कैसे निकालें भाई? So I had the formula r equal to mv by qb. So from there v equal to qbr by m. Now put this over here, so that is equal to qbr by m the whole square. So 1 by 2 m q square b square r square by m square. So the kinetic energy of the charged particle comes to be q square b square r square by 2m. So that is the kinetic energy of the charged particle which is moving in a uniform magnetic field. So this is a base of the cyclotron. Cyclotron basically इसी फैक्टर्स पे डिपेंड करता था. यही सारे फैक्टर्स हम लोग साइक्लोट्रॉन्स में देखते थे. यही सब kinetic energy, टाइम पीरियड सब फाइंड करते थे. बट सिंस द साइक्लोट्रॉन इज नॉट देयर, बट दिस इज द बेस ऑफ द साइक्लोट्रॉन. कैसे हम लोग चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड, बाकी सब हम लोग फाइंड कर पा रहे थे. ओके, so for the time being we are going to stop here, and then tomorrow in the next class we will start from the next topic, that will be the most of the charged particle when it is moving
मेकिंग एन एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर थीटा एंगल पे मूव करता तो क्या होता, तो वो हम लोग कल देखने जा रहे हैं। कल हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे। सो सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम टॉपिक, ओके।